Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. So let's get started with news topic list. Today is 15th of March. The first topic is COVID jab for 12 to 14 age group. The government has finally decided to inculcate this number of population. Second, maternal mortality ratio has declined by 10 points. Good news coming with regards to the maternal mortality ratio. Third, SC concern over fake COVID claims. This is regarding the ex gratia amount which Supreme Court has basically asked the state government to provide. Second last is 32 new roads on India-China border. And the last is an editorial, Fragmenting World Order, the United Nations. So most of the news that I'm covering today is from the Hindu itself. Apart from the news and editorial analysis, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button, right? And just to tell you about the newest app, this is 2.0, which will give you a lot more other facilities like daily news articles, daily MCQs, and A to Z study material can be downloaded from our app. So do check it out. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं. Starting with the first news of the day, that is COVID jab for 12 to 14 age group. This particular news is important for General Studies paper 2, that is issues related to development and management of health. So in a measured decision to boost the vaccination process, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट की जाएगी फॉर अ स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ 12 to 14, राइट? दोज हु वर बोर्न फ्रॉम 2008 to 2010, एंड गवर्नमेंट is expecting this to start from tomorrow, that is March 16, 2020. तो फाइनल प्रपोजल्स तैयार कर ली गई है, सब एग्जीक्यूशन प्लान्स रेडी हैं, एंड द गवर्नमेंट वुड बी स्टार्टिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12 to 14 फ्रॉम टुमारो. So the vaccines to be administered would be the Corbevax, एक important vaccines हैं जो कि Biological E Limited हैदराबाद में बनाई गई है. And according to the Ministry of Health and Family Welfare, the decision was taken to deliberate the scientific bodies, right? After the consultations, after all the approvals that was undue, final ये सारी चीज़ों को consideration करने के बाद गवर्नमेंट ने प्रोसेस को स्टार्ट किया है. Now what is Corbevax and how does it different from the other vaccines? So Corbevax is India's first indigenous vaccine developed by the receptor binding domain protein subunit against the COVID-19. So this is again something important for your prelims examination. And Corbevax is also has been granted the approval to conduct trial up to children with age group of 5. So something which is specifically and dedicated to the children age group or the child age group. Now it has to be administered intermuscular route with 2 doses at an interval of 28 days apart. अभी भी recently जो adolescence age group है below 18, उन लोगों के लिए भी जो interval रखी गई थी 28 days की. Now the child above 18 is already getting vaccinated. Most of the children has already got the vaccine. Now the government has so far administered 9.01 crore doses, and this vaccine was again built by indigenous company, that is Bharat Biotech. जो कोवैक्सीन है उस पर्टिकुलर वैक्सीन को 15 से 17 के एज ग्रुप में गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दी गई है. नाउ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसको EUA कहते हैं, तो बायोलॉजिकल जो ई कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, दे हैव गॉट द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस फ्रॉम द रेगुलेटर्स ऑन द कोविड-19 वैक्सीन विच इज फॉर एज ग्रुप 12 to 18, राइट? 15 to 17 ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है. अब ऑलमोस्ट आप अगर ये 12 से 15 को देखोगे तो पूरा 12 से 18 तक के लोगों को वैक्सीनेशन मिल रही है. Now the union government has made an advance payment of 1500 crore rupees, and they have reserved almost 30 crore doses of Corbevax, which is again a very important milestone and decision taken by the government of India. Now experts की जो opinion है वो थोड़ी अलग अलग है, सब लोगों की अपनी अलग opinions है. The announcement has evoked a mixed reactions, जहाँ पे जो मेडिकल फेटर्निटी के लोग हैं उनकी अपनी बातें कही गई है, जहाँ पे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने कहा है that this has to be tangible benefit on the vaccine. Definitely vaccine is something which is helping to reduce the impact of COVID-19 virus and its repercussions to the human body.
नाउ इन केस ऑफ चिल्ड्रन कोविड-19 की जो इन्फेक्शन की बात करें तो कई ऐसे एक्सपर्ट ने कहा है कि ये उतनी नॉन सीरियस, इसकी जो सीरियसनेस है बच्चों में कम देखी गई है, एंड इवन इट हैज शोन दैट द चाइल्ड इज हैविंग अ गुड इम्यूनिटी, सो वेदर वी शुड बी गोइंग टू दिस एज ग्रुप और नॉट, so this is a diverted opinion that is coming from the medical fraternity. Now, if you look into the infograph, you will be able to understand and find out how things are working. So the health ministry has decided to vaccinate the children for age group of 2 to 14 with Corbevax. Almost 180.3 crore doses जो है administer की गई हैं, and 80% of the eligible population, that is 15 to 18, right, तक के लोगों को vaccinate कर दिया गया. सो डोजेज ऑफ, अगर टाइप्स ऑफ डोजेज की बात करें इंडिया में, एक तो प्रिकॉशनरी डोजेज हैं, उसके बाद सेकेंड डोज एंड देन इज अ फर्स्ट डोज, राइट. सो दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड. यहाँ पे प्रिकॉशनरी डोज की बात करें 2.01 करोड़, सेकेंडरी डोज 81.4 करोड़ और फर्स्ट डोज 96.9 करोड़ रुपीज है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एज ग्रुप, 15 से 17 में 9.02 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट की गई है, 18 से 45 में 105 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट की गई है, 45 से 60 में 40.1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट की गई है, एंड 60 प्लस में 25.3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट की गई है. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, एंड डेफिनेटली वी कैन अप्रिशिएट द पार्ट ऑलरेडी पहले डिले हुई, बट अब जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है. वी नीड टू इनहांस इट मोर. Now, the second news is maternity mortality ratio declined by 10 points. This particular news is important for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors from a design implementations. और इसी पेपर में जो issues related to management of health है वहाँ पे भी important है. So according to the special bulletin which was released by the Registrar General of India, maternity mortality ratio की बात की गई है MMR, it has declined by 10 point, right? What is MMR? MMR stand for death due to complications during the pregnancy and childbirth. वैसे मदर की या चाइल्ड की जो डेथ हो जाती है during the pregnancy, that is counted as a ratio of MMR. Now अगर कंट्रीज में देखें ट्रेंड किस तरह से, the number has declined. पहले ये 113 थी 2016-18 में, then it has gradually decreased to 103 in 17-19, and finally the reduction of percentage is 8.8%. This is the latest figure that we have, and the country has witnessed a progressive reductions of MMR, which is 130 in 2014 और 16 के बीच में, उसके बाद 122 देखी गई है 15 से 16, and 113 in 2016 and 18, and now this is 103 in 2017 and 19. So this is the latest data. You must know at least this figure. Exams में नहीं पूछे जाएंगे, but आपको ट्रेंड पता होना चाहिए. Now with the percentage decline, India is on track to achieve the SDG goal, where it has target 70 lakh live birth by 2030. This is what the target was set by the government of India under the Sustainable Development Goal. Now you can see this trend 2014-16 में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो इसी ग्राफ फॉर्मेट में है. एट प्रेजेंट दिस इज 103. तो स्टेट की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल है उस टारगेट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो 5 स्टेट से बढ़ के 7 स्टेट में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है. केरला 30 पॉइंट्स के साथ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात. सो यू कैन सी दीज स्टेट्स एंड देयर पॉइंट्स, राइट. दिस points number is not important, but you should know which states has performed on what level. Now there are 9 states that have achieved MMR target set by the National Health Policy, which includes 7 states including Karnataka and Haryana. उसके बाद उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब, बिहार. You are all these states. You can pause this video and you can read out the name of entire states. Specifically उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी रही है. तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस की अगर बात करें, so encouraging achievement have been seen from Uttar Pradesh, which has shown the maximum decline, that is 30 points. Rajasthan 23 points, Bihar 19 points, Punjab 15 points, and Odisha 14 points. और Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh की बात करें, they have shown 50% decline in the MMR. Again, a good number. While Jharkhand, Rajasthan, Bihar, Punjab, Telangana, Andhra Pradesh have shown decline between a range of 10 to 15%. मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका की बात करें, they have witnessed a decline of 5 to 10%. So this is an important slide. You can take a screenshot of this, which will help you to revise the exact data when you require at the revision and examination. Now government की कुछ important interventions रही थी to ensure MMR को कम की जाए.
तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव जो है, लक्ष्य नाम से जाना जाता है इसको। इट्स अ कंजक्शन ऑफ द प्रोग्राम वे गवर्नमेंट के जो पहले के स्कीम्स है लाइक जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जो है, दे हैव हेल्प टू रिड्यूस द ओवरऑल MMR इन इंडिया, which is a good initiative. If you're writing in mains paper, specifically in general studies 2 or 3, you have to mention them in mains, right? Now, additionally, flagship schemes की बात करें, like Women and Child Development Ministries ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान के साथ जो न्यूट्रिशनल टारगेट की थी, न्यूट्रिशनल डिलीवरी को लेकर के, उसने भी बहुत हद तक हेल्प किया, स्पेशली पर्टिकुलरली टू द पॉपुलेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन एंड स्पेशली द चाइल्ड विच हैज रिसेंटली बॉर्न, और ऐसे चाइल्ड जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई उन लोगों के लिए, जो मैल नरिश चाइल्ड है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक पॉलिसीज और प्रोग्राम लाए हुए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी बहुत हद तक सही रही। Now moving ahead with the other news, that is Supreme Court concerned over the fake COVID claims. This particular news is important for General Studies Paper 2, Structure, Organization, Functions of Executive and Judiciary. So recently Supreme Court ने concern raise की है regarding the fake claim which is coming out of the ex gratia compensation for those people who have died due to COVID-19. उनके किन्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50,000 रुपीज एज अ कंपनसेशन देने की जरूरत है, बोथ फ्रॉम द स्टेट एंड फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों अपने मिला करके देंगे 50,000 रुपीज, राइट। सो द कंपनसेशन वाज मेंट टू द फैमिली मेंबर्स जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर के किसी इंडिविजुअल को कोविड-19 के टाइम में उनकी लॉस हुई है, उनकी डेथ हुई है, जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर को लॉस किया है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज नोटेड इट हैज नेवर विजुअलाइज्ड दिस टू बी मिसयूज। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह के जो स्कीम्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली जो डेथ हैं, जो जिन लोगों की कोविड की वजह से डेथ हुई उनके फैमिली मेंबर के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम बनाई गई थी, बट इसकी फिर भी मिसयूज की गई है बाय सम पीपल, राइट। सो द एपेक्स कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ हाई लेवल इंक्वायरी व्हिच वुड बी डन बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब फेक डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं, दिस हैज बीन ब्रॉट इनटू द कॉग्निजेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So Solicitor General on behalf of Government of India has submitted the instances of fake death certificates जहाँ पे ex gratia जो amount है वो उनके किन को देनी थी, उनके रिश्तेदार को देनी थी, but actually some fraud was reported here also, and the money from the aid was sourced by the state and their respective disaster relief funds. तो state जो है अपने disaster relief funds से उन लोगों को ex gratia amount दे रहे हैं under the directives of the Supreme Court of India. तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स थी, एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, कि एक अपॉइंटमेंट की जाएगी डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर्स की जो कोऑर्डिनेट करेंगे विद द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अथॉरिटी टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन टू द फैमिली मेंबर ऑफ द कोविड-19 विक्टिम्स. Now, the other news, that is 32 new roads on India-China border. This particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it, Design and Implementations. तो recently Ministry of Home Affairs ने एक information दी है parliamentary committee को, where it has said that it has allocated 12,434 crore rupees as an expenditure for the construction of 32 road on India-China border. This is very important and strengthening India's level in the eastern Ladakh region. खास करके जो escalations हुई हैं ईस्टर्न लद्दाख वाले regions में, वहाँ के लिए एक बहुत ही important milestone step होगी इंडिया की तरफ से. So the ministry has also said that 32 helipad were also constructed and upgraded on the Chinese border. तो बहुत सारे multiple locations थे वहाँ पे इसको बनाया गया. Although this location has not been disclosed because of the security reasons, but this is what the government has to say. Now post Galwan incident के बाद गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने जो राज्यसभा में टेबल की है रिपोर्ट, उसके बारे में ये बताया गया है that post Galwan incident government has sanctions 32 road across the India-China border that would start on 8th road. यहाँ पे भी जो completions work हो गई है वो 8th road को complete कर दिया गया. The proposal was stopped by the wake of the standoff during the India-China standoff in Eastern Ladakh. और phase 2 और phase 3 constructions की बात करें, it was delayed due to security, environment clearances and land acquisition issues. If this would have sorted out, India would definitely increase the pace of construction for phase 2 as well as for the phase 3. So this is how India is moving forward with all the infrastructure development across the India-China border. Now, if you look into the budget allocations, the ministry has sought the amount of 3,637 crore rupees from the Ministry of Finance on the border
infrastructure scheme, that is budget estimations हैं इस बार की, ये projected हैं. And the committee has also understand the reason for seeking such high implication. बताया गया कि जो ऑलरेडी बजट एलोकेट की गई थी उसकी भी यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुई है पहले वाले बजट्स में भी. तो इतनी हाई एलोकेशंस की क्या वाकई में जरूरत थी? दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट एंड अदर स्क्रूटनी पार्टी हैज टू say. The ministry informed that the panel to inform about the improved infrastructure to enhance the operational capacities, security forces, government has undertaken various project schemes in the few long year, and China is also developing their infrastructure. वहाँ पे उन्होंने bridges भी बनाए. तो इंडिया को इस तरह के steps लेना काफ़ी ज़रूरी था to counter China's initiatives in terms of infrastructure development. Now, Indo-China border roads की अगर बात करें तो Ministry of Home Affairs stated कि जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसकी जो फेज 1 थी उसमें कंस्ट्रक्शन जो की गई ऑलमोस्ट 25 रोड्स की विच हैज मेजरिंग 751.58 किलोमीटर और जो एक्चुअल कॉस्ट आई एस्टिमेशंस दैट इज 3482 करोड़ रुपीस. ऑफ दिस 18 रोड मेजरिंग 475.29 किलोमीटर वेर ऑपरेशनल और जो नेक्स्ट वर्क है वो रिमेनिंग है, अगले साल 7 और कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है जहां पे उसके बाद ये फाइनल पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी. Now, the first phase was initiated in 2005 where it was decided that Ministry of Home Affairs would construct 27 priority road of 608 kilometer long China. And the second phase was approved on September 2021 months long where 20 Indian soldiers were killed, clashes of the Chinese People Liberation Army in the eastern Ladakh region. Now moving to the editorial part, that is Fragmenting World Order Unitednations. So this particular editorial is important for general studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. So what I'm going to discuss under this editorial, there will be 5 important subheads. The first is United Nations Security Council, nuclear safeguards, economic actions or economic sanctions, alternative trading agreements, or India needs to ponder upon its decision on abstaining the voting of बेसिकली जब रशिया और यूक्रेन को लेकर के वोटिंग हुई थी इंडिया ने अब्सटेन किया. सो विल अंडरस्टैंड द एंटायर एडिटोरियल इन डिटेल इन सिंपल वे और यूक्रेन क्राइसिस की में इंडिया की क्या स्टैंड है उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो नियरली 3 वीक्स जब रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, ऑलमोस्ट इट हैज़ बिन 3 वीक, बट द सिचुएशन इज नॉट कमिंग टू नॉर्मलिटी आफ्टर ऑल द नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स. अभी भी रशिया बम्बार्डिंग कर रहा है. कीव में भी कल उसने बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग की हुई है. So this is how the news is coming and जो इसके repercussions हैं इंडिया की जो अपनी स्टैंड रही है इस पूरे इवेंट को लेकर के, this has to be counted in a longer run. This is what Susheni Haider has to say in this editorial. While some are focusing on how India refused to criticize Russia's action, चाहे वो abstentions की बात की जाए जहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने abstain किया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इंडिया के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या फिर जो क्वाड के पार्टनर्स हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ क्वाड. रिसेंट में बहुत सारी क्वाड की मीटिंग्स हुई है, क्वाड के मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं वेयर इंडिया इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स. बट इस डिसीजन के बाद वेस्ट और क्वाड इंडिया को कैसे देखेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. Now, the economic cost of the unprecedented sanctions from the US and Europe will have an impact on India's trade, energy, and defense purchases. So this can be a very important question in mains paper where they can ask you कि इंडिया ने जिस तरह से abstain की है तो क्या उसके रिपरकशन क्वाड मेंबर्स से या वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया को देखने पड़ेंगे. Now, UN and Security Council की अगर बात करें, the events in Ukraine have exposed the United Nations and Security Council for their complete ineffectiveness. हमने देखा है कि UN Security Council एक ineffective institutional body भर के आई जहाँ पे रशिया ने उसके बातों से इत्तेफाक नहीं रखा, उसके बातों को नहीं माना, उसको नकारा, and they have finally invaded the Ukraine despite all the warning coming from the United Nations Security Council. Now, the Russia's action on Ukraine may be in terms of refusing to seek international mandate, जहाँ पे इससे पहले भी इवेंट हुई है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक में पूरी तरह से इन्वेड किया था 2003 में, इजराइल बम की थी लेबनान में 2006, सऊदी ने कोalition बनाई थी यमन के साथ 2015 में. सो उसके अलावा इस बार जो इंसिडेंट हुई है यूक्रेन में which is considered to be the bigger blow after the post-World War order that has been created. So among that, which has started from 2003, this would be the biggest invasion taking place from Russia to Ukraine. Now, न्यूक्लियर सेफगार्ड की बात की गई है. रशिया की जो न्यूक्लियर सेफ्टी की अगर बात करें, इससे पहले
चर्नोबिल डिजास्टर हुई थी, जहाँ पे जब उस टाइम पे चर्नोबिल जो है वो सोवियत यूनियन में थी, एक न्यूक्लियर ऑर्डर को क्रिएट करने की बात की गई थी कि वी नीड टू मेंटेन द ऑर्डर बिकॉज न्यूक्लियर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इवन द रशिया मिलिट्री हैज मूव टू द एरिया ऑफ ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, जो यूरोप में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, राइट? वी हैव ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन इन दिस रिगार्ड. If you want, you can refer to the video as well. Now, after the US detonations of atomic bomb, जहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में बमिंग की गई थी, तो एक बहुत बड़ी कंसर्न रेज हुई थी. उसके बाद जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी फॉर्मेशन हुई 1956 में. Now, the world must also consider cost to nuclear non-proliferation regime and credibility as well. So essentially, it is very important कि न्यूक्लियर वॉर किसी भी कंट्री में ना हो, बिकॉज उसके रिपरकशंस, पोस्ट रिपरकशंस बहुत हाई हैं. एंड इवन फॉर टाइम बीइंग हिरोशिमा और नागासाकी में अभी भी उसके कॉन्सेस होते आ रहे हैं आज से पिछले 70 सालों के बाद भी, राइट? नाउ इकोनॉमिक एक्शंस की अगर बात करें, इकोनॉमिक सैंक्शंस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस ने भी सैंक्शंस लगाए हैं फाइनेंशियल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को. बट एनालिस्ट का ये मानना है ये जो सैंक्शंस लगाई गई है वो बहुत बड़े रशिया के जो बैंक्स हैं या जो एनर्जी एजेंसीज हैं उनमें नहीं की गई है, क्योंकि उसके पोस्ट रिपरकशंस और ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज रशिया इज ऑल्सो द पार्ट विच इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट मोर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज. तो अगर इवेक्शंस देखी जाए, स्विफ्ट से हटा दिया गया है रशिया को, और उनमें मास्टर कार्ड, वीज़ाज, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपाल जैसे जो पेमेंट गेटवे है वो भी कंप्लीट सैंक्शंस कर दिए गए. दे आर नॉट एबल टू यूज दैट. So these are some of the major economic sanctions coming from the Western countries to Russia. Now, if you talk about alternative trading agreements, Russia has alternative trading agreement with countries like China, India, and much of the Eastern Hemisphere countries. और एज फॉर मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें, इंडिया इंपॉर्टेंटली डिपेंडेंट है रशिया पे फॉर मिलिट्री एंड इम्यूनाइजेशन पार्ट, जिसके लिए सैंक्शंस भी की गई है बाय रशिया ऑन द कार्ड्स. एंड रशिया बैंक्स आर नाउ यूजिंग चाइनीज पे ऐप, दैट इज यूनियन पे, for further transaction and the payment, right? तो India's need to ponder on its decision. तो इवेंट्स में बेसिकली जो रशिया के डिक्लेरेशंस है यूक्रेन के वॉर को लेकर के, ये आइडियाज़ जो 1945 में या 1990s में फ्रेगमेंटेड इंटरनेशनल स्टैब्लिश ऑर्डर की बात की गई थी, उसको लेकर के एक बड़ी कंसर्न है. और जिस तरह से डीग्लोबलाइजेशन की एफर्ट्स की गई है रशिया की तरफ से, इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल. इंडिया ने एब्सटेंड किया था वोटिंग में, तो ये देखना होगा कि शॉर्ट टर्म में इसके इम्प्लीकेशंस तो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में जो रिलेशनशिप है क्वाड मेंबर्स के साथ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, उसे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. बट इन लॉन्गर टर्म द नेशंस मूव टू हैव प्रोएक्टिव अपहोल्डिंग स्ट्रेंथ, रीइन्वेंट ग्लोबल ऑर्डर एंड मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस. दिस इज व्हाट इंडिया शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड विद. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of your study question. For first question, the correct option is C. For second question also, the correct option is C. Today's MCQ for practice, Making Peace with Nature, has been reportedly published by United Nations Environment Program, United Nations or Environmental Panel for Climate Change, that is IPCC, Food Agriculture Organization, World Wildlife Fund for Nature. Second practice question of the day, consider the statement about vertical launch short-range surface to air missile. It is an ingeniously designed, developed by DRDO. It is capable of neutralizing aerial threat, including the close range, including the sea skimming targets. So this was all about the questions. You have to practice it, and you practice a lot more questions so that they can build you a strong foundation for the upcoming prelims examination. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.